Hello students, so today we are going to start with semi-conservative replication of DNA. So replication simply means making copies. So over here DNA makes copies of itself. We'll later on see that why is it called semi-conservative. So हम पहले short में discuss करते हैं. We have these two strands. तो ये जो DNA के दो strands है, initially they get separated, अलग हो जाते हैं, and then new strands are formed on this part as well and on this part as well. Now we already knew to make new forms DNA is made up of nucleotides. तो नया strand बनाने के लिए हमें nucleotides की ज़रूरत है और ये nucleotides already cell के nucleoplasm में present होते हैं, but they are in inactivated form. So initial process is to activate those nucleotides. We'll just see activation of nucleotides. So basically nucleotides are present in the form of monophosphate. So we have DAMP, DCMP, we have DGMP and DTMP. So we have adenosine monophosphate, we have cytosine monophosphate, guanosine monophosphate and tyrosine monophosphate. ये हमने पहले ही नाइट्रोजन बेसिस किए थे ATGC. The same thing is there. But monophosphate होने के वजह से ये inactivated form में है. We just need to add ATPs and convert this monophosphates into triphosphate. So at the end you will be getting DATPs, DCTP, DGTP and DTTP. So monophosphate form will be getting converted into triphosphate form. इस process को हम बोलते हैं activation of nucleotides. यहाँ पर ATPs की ज़रूरत पड़ेगी. You will need ATPs over here for this activation process. Now जब हम DNA का replication process start करते हैं तो एक starting point होता है जहाँ से replication initiate होता है. So over here that point is called as origin, or you can say ओराई site भी बोलते हैं उसे. In case of prokaryotes सिर्फ एक ही origin site होता है. In case of eukaryotes बहुत सारे origin sites हो सकते हैं. So prokaryotes and eukaryotes का meaning आपको already पता होगा. Prokaryotes में जो DNA होता है उसको nuclear membrane नहीं होता है cover करने के लिए. That's a primitive kind of nucleus. And in case of eukaryotes हमारे पास जो DNA है that is packed inside the nuclear membrane. Then इस origin site पे replication process start होगा. Okay? Over here replication start होने के लिए एक cut आना ज़रूरी है. We need to have a cut जहाँ से separation start होगा and that cut is called as incision, which is caused by an enzyme called endonuclease. Okay, now once we have got this endonuclease, उससे cut हो चुका है, इसके बाद हमें जो coiled up DNA molecule है उसे हमें straight करना है. So over here we need to unwind the DNA strand. Unwind करने के लिए we require an enzyme called helicase. Helicase is important to break the helical structure of DNA. Helicase जो है DNA का helical structure को तोड़ने के लिए, मतलब उसको straighten up करने के लिए important है. But helicase एंजाइम अगर एक बार उसे अनवाइंड कर देगा फिर भी उसे वैसे ही फॉर्म में स्टेबल रखने के लिए वी रिक्वायर वन मोर एंजाइम कॉल्ड SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन. तो आप एक बार वो जो खुल जाएगा ओपन होने के बाद वो उसी स्टेट में वैसे ही रहना चाहिए, इसीलिए वी रिक्वायर this enzyme. Okay, so clear with this. Till now we have studied activation of nucleotides, that is we are converting the monophosphates into triphosphate form by using ATPs. Second thing is we need to identify the origin site, and at that origin site we have to develop a cut which is called as incision. And then once incision has been started, simultaneously unwinding will also start. For unwinding the DNA strand we require
enzyme helicase, and to stabilize this structure we require enzyme SSBP, single stranded binding protein. After this, your next step is synthesis of new strand. Now that's very simple to understand. Over here if you see, till this process you will get a structure like this. You'll get a structure like this. One end would be obviously from 3' to somewhere 5', and then again from 5' to somewhere 3'. So you'll have two strands over here which have been separated from each other, but obviously there would be certain nucleotides present over here, nitrogen bases, and over here as well. You need to remember that synthesis of new strand will always take place in the direction of 5' to 3'. So when it is opening, जब वो open होता रहता है उसी टाइम पे replication start भी हो जाता है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब तक ये पूरा open up नहीं होगा तब तक replication process initiate नहीं होगा. So it will keep on opening from here. The enzyme would keep on acting till then. यहाँ पर replication start हो जाएगा. For this we require RNA primer which will get attached itself towards the 3' end. So we have this RNA primer over here. Okay, I'll make it like this for you to understand properly. अभी वैसे ही ये तो 5' है, RNA primer यहाँ पर नहीं लगेगा. तो when it open up, for example when it is like this, if this is 5', we'll consider this part as 3'. So RNA primer will come and join over here. But again when it opens up a little bit more, then we have this as the 3' end, then RNA primer will come and join over here. So simultaneously over here, which will be a 5' to 3', will call up, this RNA primer will call these activated nucleotides according to what is present over here. For example, if suppose your adenine group is present, then we know that adenine requires thymine group, and that's why over here we'll be having T nucleotide, that is this nucleotide. Then again, if here it is C, you'll be having over here G. Simultaneously 5' to 3' will be formed very quickly as compared to this strand, because RNA primer has to come over here, then it will call a nucleotide over here. Again it has to come over here, then it will call a nucleotide over here. So over here you can see certain fragments have been formed. यहाँ पर जो स्ट्रैंड है वो जल्दी जल्दी बनेगा, बिकॉज जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली मिल रहा है. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से इमीडिएटली पीछे पीछे न्यूक्लियोटाइड लगते जाएगा. बट ओवर हियर द प्रॉब्लम वुड बी ओपन होने के बाद ही वहाँ पर आरएनए प्राइमर आएगा एंड देन वो नीचे न्यूक्लियोटाइड लगाएगा. अगेन आरएनए प्राइमर एंड देन विल बी हैविंग न्यूक्लियोटाइड्स ओवर हियर. सो दिस प्रोसेस विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट ये जो चेन है ये बनाने के लिए विल रिक्वायर एन एंजाइम कॉल्ड पॉलीमरेज. So here you have a continuous strand, लेकिन यहाँ पर कुछ fragments हैं, and that's why these fragments are called as Okazaki fragments. Okay, ये जल्दी बन रहा है इसीलिए हम इस strand को बोलेंगे leading strand. और उसी के साथ जो पहले वाला template है, that would be called as leading template. सो बेसिकली अगर आपको डायरेक्शन सेंस में लिखना है तो आपको लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है 5' to 3' एंड लीडिंग टेम्पलेट इज 3' to 5'. अगेन बिकॉज दिस इज लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे ही रह जा रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा. दैट्स व्हाई दिस स्ट्रैंड वुड बी कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड, which would be in opposite to this direction, that is 3' to 5', and the template on which the strand is formed would be called as lagging template. And later on ये जो सारे fragments है इनको join करने के लिए one more enzyme will be required, and that would be called as DNA ligase. So over here if you see, we studied
Many enzymes, and name of enzymes is very important. Here we have endonuclease enzyme, then we have helicase, then we have SSBP. Over here we require polymerase and ligase. We'll just revise this once again. हमारे पास हमें फर्स्टली न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना है जो कि मोनोफॉस्फेट फॉर्म में अवेलेबल है. To activate this will be requiring ATPs. ATPs से सारे monophosphate will get converted into triphosphate. Sorry, by mistake I told this tyrosine, that is thymosin. Then we have a origin site जहाँ पर replication process start होगा. वहाँ पर हमें cut develop करना होगा. To develop this cut will require an enzyme which is called as endonuclease. Now after this cut has been generated और unwinding भी simultaneously start हो जाएगी. For this unwinding of DNA strand we require enzyme helicase और उस structure को stabilize रखने के लिए we require enzyme SSBP, that is single strand binding protein. इसके बाद हमारा जो न्यू स्ट्रैंड है, बिकॉज डीएनए के जो टेम्पलेट्स है वो सेपरेट हो चुके हैं, अभी हमें ज़रूरत होगी नया स्ट्रैंड बनाने की. सो इसलिए हमें जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है वो यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे. बट ये न्यूक्लियोटाइड्स तभी आएंगे जब यहाँ पर आरएनए प्राइमर अवेलेबल होगा, बिकॉज दिस आरएनए प्राइमर हैज़ द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट न्यूक्लियोटाइड्स. सो वंस RNA primer gets attached to the 3' end of the template, then RNA primer will call up nucleotides, complementary nucleotides. Adenine है तो thymine, thymine है तो adenine, ऐसे करके यहाँ पर फटाफट जो नया स्ट्रैंड है वो बन जाएगा, because DNA synthesis always takes place in the direction of 5' to 3'. बट यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड का बनने का प्रोसीजर है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज़ रिवर्स. सो इसे फॉर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. सो दैट स्ट्रैंड वुड बी कॉल्ड एज लैगिंग strand, whereas this strand would be called as leading strand. और उसके साथ जो पुराने वाले टेम्पलेट्स हैं उनको हम leading template बोलेंगे और ये साइड में हम lagging template बोलेंगे. I hope you have understood this. Okay students, so this semi-conservative replication of DNA was given by Watson and Crick, but it was proven by Matthew Meselson and Franklin Stahl in 1958. How? We'll just see. They took bacteria called E. coli and they cultured this E. coli in a medium containing a heavy isotope of nitrogen which is 15N. तो अगर हम कंटिन्यूसली इसी मीडियम में उसको ग्रो करेंगे तो उनके डीएनए में 15N के आइसोटोप्स मिलेंगे. देन सेकेंडली हमने जो कल्चर मीडियम है वो चेंज किया एंड देन हमने उसे लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप में ग्रो करना स्टार्ट किया. ओके तो अब अभी इफ यू सी कंप्लीटली अगर ब्रेकडाउन होता और कंप्लीटली अगर न्यू स्ट्रैंड होते तो उसमें जो डीएनए हमें मिलेगा वो सिर्फ 14N का होना चाहिए था, करेक्ट. बट टू प्रूव दिस सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब क्या, सेमी इज आधा, कॉन्जर्वेटिंग इज जो पुराना वाला है उसको हम प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं. दैट्स व्हाई वी हैव सीन अर्लियर कि एक टेम्पलेट है और एक न्यू स्ट्रैंड है, तो उसी को ये प्रूव करने के लिए बना था. जो हमें रिजल्ट्स मिले थे वो एग्जैक्टली वैसे ही थे कि जो कुछ है वो नए मिले हैं जिसमें सिर्फ 14 नाइट्रोजन होगा और जो कुछ है वो हाइब्रिड मिले हैं. दैट मीन्स उसमें ये वाला भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है. हाउ विल जस्ट सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. लेट्स कंसिडर पहले जब मैं 15N कल्चर मीडियम में ई कोलाई को कल्टीवेट कर रही थी तो उनके डीएनए स्ट्रैंड्स बने थे विद, I'll just make it in an easy way. तो ये 15N वाले जो मैं इसको ब्लैक कलर में दिखा रही हूँ. So we have this DNA strand which is made up of 15N मीडियम. तो इसमें हमने ऑब्वियसली 15N डाला है तो इसीलिए डीएनए में 15N के हेवी आइसोटोप्स प्रेजेंट है. देन जब हम इसे रेप्लिकेट करेंगे तो भी हमारे पास यही रहने वाले हैं, करेक्ट. देन हमने मीडियम को चेंज किया, हमने मीडियम लिया 14 नाइट्रोजन, 14N, दैट इज लाइट आइसोटोप. सो व्हेन वी आर टेकिंग दिस लाइट आइसोटोप we'll be having one this and one a light strand, again one this and one you have a heavy strand. So one heavy and one light strand. Again if you're again culturing it in the same 14N medium, you're letting it do it again, you'll be getting, see, this strand and this strand will get separated, this strand and this strand will get separated. Oh, I'm sorry,
yeah, so both of these strands get separated, both of these strands get separated. Then because अभी भी हमारे पास 14n के isotopes है, we are cultivating it in the same medium, that's why you have only this nitrogen bases. So if you observe it properly, आपके पास दो ऐसे मिले जो completely 14n से बने हैं और दो ऐसे मिले जो कि हाइब्रिड है. बोथ ऑफ दीज आर हाइब्रिड. सो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो पहले वाले जो डीएनए टेम्पलेट्स प्रेजेंट होते हैं, दोज डीएनए templates are being conserved generation to generation. I hope you have understood. We have taken a new initiative of starting a Telegram channel. आपको मैंने पहले भी comment section में बताया है. You please do follow us. I'll just write it down over here. Our channel's name is Saraswati Chaya Tutorials. You need to download Telegram app. आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. दिस इज अ चैटिंग ऐप एंड बेसिकली हमने यहाँ पर जो चैनल ओपन किया है दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर पीपल लाइक यू. और जो भी आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो थोड़े लो बैकग्राउंड है, जो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ वहाँ तक उनको न्यूज़ पहुँचाइए कि वी हैव दिस चैनल जो हमें नोट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिस्ट्री लेक्चर्स एज वेल एंड होप्स ऑफ फिजिक्स एज वेल. So this is a initiative from our side to help all those students who really want to do good and want to have like they have problem in understanding the concept. हमारा जो concept clearance है वो ही बहुत ज़्यादा important है. Exam के tips वगैरह सब आपको इसी में मिलेगा. So guys, come back. We'll just meet you again back in time. Bye bye.